गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, डीएसबी, एससी, एसएसबी, एससी एंड देन वीएसबी सारा कुछ कवर किया। ओके, सो उसी के नेक्स्ट आगे हम आज एंगल मॉडुलेशन स्टार्ट करेंगे। सो उसके पहले हम आपको थोड़ा एक एप्लीकेशंस बता दे रहे हैं कि जो पिछले क्लास में हम पढ़े हैं कि उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। ओके, सो द एप्लीकेशन, क्योंकि ये 1 मार्क्स में हम अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है ये क्वेश्चंस। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट एएम सिस्टम। ओके, सो जैसा कि हमने पढ़ा था कि पहला मॉडुलेशन टेक्निक एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन टेक्निक था। सो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन टेक्निक जो कि एएम शॉर्ट में लिखते हैं, इसका हम एप्लीकेशन यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन है एएम रेडियो। ओके, एंड द शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्ट। शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्ट दूसरा पढ़ा था हमने डीएसबी एससी। ओके, सो उसका एप्लीकेशन है डेटा मॉडेम में। कलर टीवी एंड कलर सिग्नल। ओके, तीसरा हमने पढ़ा था एसएसबी, जिसका एप्लीकेशन है टेलीफोन में एसएसपी यूज करते हैं। एंड देन लास्ट था वीएसबी, जिसका यूज़ हम टीवी पिक्चर सिग्नल्स में करते हैं। पिक्चर सिग्नल्स। ओके, सो ये एप्लीकेशन है। ठीक, मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें कंपैरिजन होगा स्टैंडर्ड एएम, डीएसबी, एससी, एसएसबी एंड वीजीबी, जिसमें बैंडविड्थ, कैरियर किस में अवेलेबल रहेगा। ओके, और किस टाइप का मॉडुलेशन होगा, सारे कुछ मतलब इन्फॉर्मेशंस ऐसी होंगी जो इसमें वो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगी। ओके, सो उसी के आगे अब हम आज स्टार्ट करते हैं एंगल मॉडुलेशन। ओके, सो टॉपिक है एंगल मॉडुलेशन। सो एंगल मॉडुलेशन में क्या है, हम क्या क्या कवर करेंगे बता दे रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जो भी होगा, एंड देन फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन, एंड देन सिंगल टोन, मल्टी टोन फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन। ओके, सिंगल टोन एफएम, एंड देन स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम, और ऐसा लिख देते हैं, इसको अलग से लिख देते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम। ओके, एंड देन नैरो बैंड, वाइड बैंड। ओके, नैरो बैंड एफएम, वाइड बैंड एफएम। जो मल्टी टोन होता है ना, वो वाइड बैंड में ही आता है। ओके, इसके बाद बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आ गई, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ एफएम, एंड देन जनरेशन, डिटेक्शन
ऑफ एफ एम। ओके, एंड देन इसके बाद है सेकेंड लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, प्री एम्फेसाइज एंड डी एम्फेसाइज। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू बेस्ड टॉपिक है। ओके, प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। ओके, एंड देन द लास्ट टॉपिक इज़ ब्लॉक डायग्राम, जो भी होगा उसका एफएम का, मतलब पहले ही कवर करेंगे, अभी लिख दिया है। ओके, ब्लॉक डायग्राम में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में एक बार देख लेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में हम बता देंगे कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन ऑफ एफएन एंड एएम, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसकी इक्वेशन हमने नॉर्मल पढ़ी थी कि जैसे हमारे पास मैसेज सिग्नल था एम टी। ओके, सो मैसेज सिग्नल हमारे पास था जैसे कि एम टी इज इक्वल टू ए एम कॉस ओमेगा एम टी, एंड सी टी कैरियर सिग्नल था जो कि ए सी कॉस ओमेगा सी टी। ओके, सो इसमें क्या है कि जो ओमेगा सी है, ए सी है, ओमेगा सी जो था वो कांस्टेंट था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में हमारा एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल का मैसेज सिग्नल के साथ वेरी कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा, मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ए एम के केस में क्या था कि ओमेगा सी वाज द कांस्टेंट। ओके, ओमेगा सी आपका कांस्टेंट था। ओके, बट एफएम के और जो एसी है वो वेरिएबल रहता है। ओके, वेरी करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, ठीक, मैसेज सिग्नल पे डिपेंडेंट होता है। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने एम की लिखी थी, एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी वन प्लस ऑफ के ए एम टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ठीक। बट यहाँ पर हमारा क्या होगा, लिसन, एफएम के केस में हम क्या लिखेंगे, सॉरी एंगल मॉड्यूलेशन के केस में हम क्या लिखेंगे। सो यू नो दैट दिस इज़ द एंगल और दिस इज़ द एंगल। ओके, यू नो दैट। सो एंगल मॉड्यूलेशन में हम क्या लिखते हैं, एंगल मॉड्यूलेशन, so just let's say we are writing a angle here, theta is nothing but of omega ct. Okay, if we consider the some phase, then the initial phase was the theta 0. Okay, so this is the angle. Okay, so this theta is a time dependent. This theta is a time dependent because of that this theta is a function of t. Okay, so we can write it just simple theta of t. Okay, so this theta of t, this theta is nothing but of the angle. So this theta of t is a linear relationship, make a linear relationship with the time. Okay, so if we make the graph of this equation, just nothing but of simple, let's say this is the time and this is the theta of t. Okay, so how to draw this equation? Simple. So this equation have a positive slope with the intercept. How much intercept at t is equal to 0? What is the intercept? Is the positive intercept is the theta naught. Okay, so we will draw this equation just it looks like this. So this is the intercept in the y-axis is nothing but of theta naught. Okay, what about the intercept in the x-axis? Intercept at x-axis is nothing but of how much? This is nothing but of minus of omega c by t, minus omega c by theta, sorry, theta naught. Okay, so what about the slope? The slope of this is nothing but of
slope is nothing but of omega c. Okay, इसका slope क्या है? Omega c. And what about the omega c? Omega c is the frequency. Okay, but this is the constant frequency. Okay, so this omega c here, omega c is the constant. Okay, in case of the angle modulation. Okay, this is the complete angle modulation. In angle theta t have a two component, one is the frequency, another is the phase, initial phase. Okay, so this omega c is a constant. Okay, and this theta naught is also a constant function. Okay, so this theta of t have a linear relationship with the time. Okay, so how we can write down this expression? Let's, if we write the equation y of t written here, y of t is nothing but of cos of theta t. Simply write it. Okay, so this y of t actually is the function of theta of t. Okay, means just we simple write down. Let's, this is a carrier signal. Okay, so carrier signal have some amplitude. Okay, and cos of the angle. Okay, how much angle here? Angle is the theta t. So theta t is nothing but of omega ct plus of theta naught. Okay, and you have already know in the 12th or the 10th physics the relationship between the angle and the frequency. You already know that the theta is equal to omega t. Okay, so here we write down here theta of t. If theta is a function of time, so it vary with the time, so differentiate, then we can write down here this d theta of t upon dt is nothing but of, if this frequency is also a function of time. Okay, if frequency is also a function of time, let's, the frequency is nothing but of us this is a simple instantaneous frequency. We are considering instantaneous part or some at some instant. Okay, so here we write down this of omega I of t. Okay, actually in case of the angle modulation, there are the two possibility: either the frequency can be changed or the phase can be changed with respect to the time. Okay, when the frequency change but the phase constant, it means the frequency modulation. But angle changes, okay, means sorry, phase change, but frequency constant means the phase modulation. Okay, so they are the two different varieties of the angle existed in the angle modulation. One is the frequency modulation, another is the phase modulation. Okay, so for understanding the FM and PM, just we are considering the relationship of the theta with the omega, so is nothing but of theta is equal to omega t. Okay, so here if we integrate this, so what we can write down, this theta of t after so theta of t is nothing but of, simply we can write down here. Okay, so omega I of t. Okay, or something with other variables we can consider here. Okay, so simply we are write down here theta of t and d of dt. Okay, and limit here something will based on the given conditions in the questions, or we can adjust the limit. Okay, so here the theta t, angle theta t of the sinusoidal, this sinusoidal is the base for the two types of the angle modulation. Okay, so this theta t, here we simply write down. Now if the initial phase is also existed, now the theta t for theta t also written as a omega I of t. Okay, I of t into t. Okay, into t plus of theta, or let's we consider phi. Okay, not this phi of t, means here this theta t is a function of omega I, instantaneous frequency, and phase is phi. Okay, this is also vary with the time, this is also vary with the time. So if frequency changes okay, so if frequency change and phase constant
इट मीन्स ये क्या होगा, FM. ओके, दूसरा पॉइंट वी कैन राइट डाउन हियर, इफ फेज चेंज एंड frequency constant it means PM. ओके, गॉट इट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, सो जस्ट वी आर कवरिंग अ वन बाय वन. ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग. फर्स्ट इज द फेज मॉड्यूलेशन. ओके, वाई वी फर्स्ट फेज मॉड्यूलेशन? फेज मॉड्यूलेशन एक्चुअली थोड़ा सिंपल है अंडरस्टैंडिंग में. ओके, so the phase modulation, so in this type of the modulation, the phase of the carrier signal, okay, is directly changes by the message signal. Okay, means the phase of, let's say the phase of the carrier signal. Okay, if let's say let the carrier signal, first we write down the definition. Okay, so the phase of carrier signal, okay, is directly changed by ये आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगे, by the message signal. डिफिनीशन पता होनी चाहिए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे. ओके, सो द फेज सिग्नल, हाउ इट लुक्स लाइक, द मेन पॉइंट. ओके, सो द फेज here, you know that let's the carrier signal here, first carrier signal, this is my of C carrier signal CT is nothing but of, let's the amplitude is A, is nothing but of that cos of omega CT. Okay, so omega CT and plus of phi of t. Okay, so phi of t here, this phi of t changes with the message signal. See here, in case of the AM modulation, this is your the message part. Okay, actually this is amplitude of the carrier signal. This amplitude changes with the message signal. Okay, got it? So simply here the phase is also changes with the message signal. So how it looks like? So this omega ct plus of, then we can write down here as a kpmt. Okay, kpmt. So this expression is nothing but of, looks like is nothing but of this simple a cos of omega ct plus of phi of t. Okay, this is the phase. Okay, so phi of t is proportional to the message signal. Got it? So here we simply write down the complete angle. What about this? Is the complete angle. Okay, so here we write down it, this theta of t for PM phase modulation. PM is nothing but of that omega ct, here omega c will be the constant. Okay, plus of kp into mt. Okay, when the message signal changes, then this angle will be changes. Okay, and this is the phase. Actually this is the phase. Once the phase will change, the complete angle will change. Okay, so here so here what about this so here actually, so this equation will become a phase modulated signal. Okay, so this carrier signal after modulation. Okay, because the phase has been changed with the message signal. Okay, so simply here we write down s of t
S of t for the PM is nothing but of a cos of omega ct plus of kp into mt. Okay, what about kp? What about kp? Tell me anyone. So here a, what about a? A is the constant, a is the amplitude. Okay, and what about omega c? Omega c is also constant, carrier frequency. Okay, carrier frequency, this is also constant. Okay, constant. Okay, what about mt? Mt is the message signal. Mt is the message signal. Okay, and then the kp is the parameter जो ये स्पेसिफाई करेगा कि फेज कितने से कितने अमाउंट से चेंज हो रहा है. ओके, सो द पैरामीटर, दिस kp इज द पैरामीटर. कैसा पैरामीटर? पैरामीटर that specifies how much change in the angle. Okay, for every unit of the change of the message signal. Okay, change in the angle for every unit of change of mt. Okay, so the unit for this, what about the unit? The unit is nothing but of that simple radian per volt. Okay, radian per volt. How you can determine this? See this here. So this is phase, unit radian. This is also phase एक तरह से, omega ct angle. So this is phase. Okay, so बस but यहाँ पर क्या है? This theta t is directly proportional to this kp mt. Okay, so just here angle theta of t is nothing but of kp mt. Okay, this is radian. Okay, this is amplitude. Let's in volt. Okay, so what about kp? Is a radian per volt. Okay, got it? Yes. So now the next point, this is the expression for the phase modulation. Okay, so now the next point here, what about the FM? So the amplitude next is the frequency modulation. In short we are saying is FM. Okay, so in case of FM, the frequency will change with the message signal. Okay, so how the frequency can change? Frequency change means, we are considering means carrier frequency. The carrier frequency will change with the message signal. Okay, in the above case the phase will change, phase was changes with respect to the message signal, but now here the frequency will change with respect to the message signal. Okay, you know that the complete angle theta of t. Okay, this theta of t, listen here, this theta of t is equal to omega ct plus of phi. Okay, some phi part here. Okay, so here was written as a kp mt. This was in the case of PM. Okay, now here theta of t is written as, let's some for instantaneous frequency. Here we can write down omega I of t.
okay, into t. Can we write down? You know that d theta of t upon dt is equal to omega I of t function of t into t, this, okay. So this theta of t is written as this theta of t. How we can write down this? So here this theta of t is nothing but of simply integration omega I of t into dt, okay. But यहाँ पर हमारा क्या होगा? The frequency will change. Listen here. So the frequency will change. So can we find out this theta of t? This theta of t from this expression, okay. So from this expression, so simply we can write down this, okay. Differentiate with respect to t, this will become the theta of t upon dt, okay, is equal to omega c, okay, plus of kp into d upon dt into mt, okay. What about this? This is nothing but of simple omega I of t, okay, and this is omega c plus of kp into d of mt upon dt, okay. इसको हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं. गॉट इट? ये समझ में आया इतना? ओके. So the next point here, so what about the angle? Actually the carrier signal, we know the carrier signal was c of t is nothing but of a cos of theta t. So once we find out that this theta t in case of the FM, so then my problem will be resolved, okay. So here see this theta of FM t, this theta of FM t is nothing but so this theta of t, actually here theta of t in case of Pm was the omega ct plus kpmt, okay. So here is simply this theta of t in case of Fm is simply omega ct will be present, okay. So the next part will change, okay. So the next part is nothing but here we are considering the constant is kf, okay. Here integration, okay, integration this part, okay. So this part is like written as here is a minus infinite to t m alpha into d alpha. We are considering another variable, okay. Listen. So here this we can write down if we differentiate with respect to t, okay. So this will become d theta fm t upon dt is equal to omega c plus of kf into d upon dt integration of minus infinite to t m alpha into d alpha, okay. This simply we can write down here, this is nothing but of omega it is omega c plus of kf simply m of t, okay. Now see this expression, this frequency, instantaneous frequency, it changes with this message signal,
Okay, got it? So the final expression for the FM will become S of t for FM is nothing but of, simply we can write down this amplitude A into cos is nothing but of complete angle. The complete angle, what about this? This is the complete angle for the FM. Okay, so this is nothing but of omega ct, okay, plus kf integration of minus infinite to t m of alpha into d of alpha. Okay, got it? जो भी आपको एक्सप्रेस उसमें क्वेश्चन में दिया गया होगा मैसेज सिग्नल, उसी के बेसिस पे योर लिमिट्स of the integration will change. Got it? So this is the FM expression. Okay, now one good thing here, omega I is equal to, this is the omega I. Okay, if we take that time is common, so this will omega I will become omega c plus of kf into mt, जो कि मैंने ऊपर भी लिखा है. ओके, बट हियर थीटा आई ऑफ t इज नथिंग बट ऑफ ओमेगा सी टी प्लस ऑफ के एफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट से t m of alpha into d alpha. Okay, what about the omega I in case of the PM? This is the omega I. Okay, this is the omega I. How we can write down it? So omega I in case of the PM just is nothing but of so here is equal to here omega I into t is equal to omega ct plus of kp into mt. If we differentiate with respect to t, this omega I is of t is nothing but of omega c plus of kp into d upon dt into mt. See here, this is the expression for the instantaneous frequency in case of the PM, and this is the instantaneous frequency in case of the FM. See this. So in case of the FM, this instantaneous frequency is nothing but of, this is the function of mt. Okay, here this is a function of mt, here this is a function of mt. Okay, but in case of the PM, this omega I is nothing but of, this is the function of derivative of the first derivative of the mt. Okay, this is the first derivative of the mt, and this is the simple linear relationship with the mt. Means जैसा mt वेरी करेगा वैसे ही ओमेगा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Okay, but in case of the PM, first derivative of the mt. Okay, so here we can see the relationship. So the relationship between FM and PM. Write down the both the expressions here. First, S of t in case of PM is nothing but of a cos omega ct plus kp into mt, and S of t in case of FM is nothing but of a cos omega ct plus of kf. Okay, kf integration of minus infinite to t into m alpha into d alpha. Okay,
So what is the relationship here? See this, how to get the FM from the PM first. FM हमें रिक्वायर्ड है FM if given the PM. So क्या करना पड़ेगा? See this is same, this cos function is same, omega ct is same, here only the change. Okay, if first we integrate the message signal and pass through this phase modulator, then we get the FM signal. See this, you have a message signal MT. Okay, क्या करना होगा? First only integrate. Okay, so first pass it through the integration. Okay, so this is let's my integration block. So integration block, okay, with respect to d alpha, here is your some function. Okay, limit minus infinite to t. Got it? Now here you will get what is the output of this integrator? Simple, minus infinite to t mt, okay, into d alpha. Got it? m alpha d alpha वही mt कंसीडर कर, वेरिएबल से आपको दिक्कत नहीं है. नाउ इफ वी पास दिस से थ्रू द फेज मॉड्यूलेटर, ओके, फेज मॉड्यूलेटर, देन यू विल गेट द FM signal. Okay, it means this is your complete block diagram. Okay, अगर आपको इसका अपोजिट कर देंगे, if you have a PM, if you have a FM signal, if you have a FM signal, you want to get the PM signal, how? Means only here the change. Means if you differentiate this integration part, here the only the message part will come here. Okay, so you have a message signal. Okay, if you pass this message signal to the differentiator block, so this is nothing but of d of dt. Okay, so what is the output of this? Output of this is nothing but of d of mt upon dt. Okay, and then pass it through the FM modulator. Okay, then you will get the simple PM. So the block diagram for this is simply is nothing but of these two parts. Okay, got it? So this is the relationship between the FM and PM, how to get the FM from the PM and how to get the PM from the FM. Okay, see this. The next part, the frequency modulation. In case of the frequency modulation, how the waveform looks like. Okay, in case of the FM. This is the last topic for today. Okay, so see here. If your message signal MT, it looks like this sinusoidal signal. Okay, अगर आपका मैसेज सिग्नल आप साइनसॉइडल सिग्नल ले रहे हैं, ओके, ये में आपका साइनसॉइडल सिग्नल है. एंड लेट्स दिस इज योर कैरियर सिग्नल. CT. Okay, carrier signal. Okay, this is your CT. Okay, so
फाइनल में आपका एफएम कैसा दिखेगा, सी दिस। सो द एफएम इज लुक्स लाइक, कैसा दिखेगा, आपका जब जब मैसेज सिग्नल, यहाँ पे एक्सप्रेशन देखिए, फ्रिक्वेंसी कैसे चेंज होगी दिस। अगर आपका द एम्पलीट्यूड फॉर दिस एमटी इज पॉजिटिव मीन्स द omega I will increase, means omega I will be greater than this omega c. Okay, but if mt is negative then this omega I will be less than this of omega c. Okay, see here. So in these parts here the mt have a negative amplitude. Okay, but in here mt is the positive amplitude. Okay, so in these three peaks or three upper half waves, omega I will be greater than of omega c, but for this omega I less than of omega c. Okay, so we simply draw it. So simply you can draw here. Okay, so see this. So here amplitude is positive means omega I more than the omega c. So here okay, but again here in this part mt is negative means omega I less than of omega c. Okay, okay, again it will be more, again okay, ऐसे वेरी करता रहेगा. सो दिस इज ऑल आर टाइम डोमेन. ओके, सो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द एफएम. सो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे और कवर करेंगे कि नैरो बैंड एफएम क्या है, वाइड बैंड एफएम, नैरो बैंड पीएम. ओके, इसके बाद देखो डेरिवेशन भी है, बट डेरिवेशन को हम कवर नहीं करेंगे, कोई लॉजिक नहीं है टाइम वेस्ट करने का. ठीक है, एग्ज़ाम्स में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बट जो भी पॉइंट्स हैं मैं आपको बता दूंगा. सो आप क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आया करिएगा. ठीक है, सो रिवीजन करिएगा. और प्रैक्टिस सेशन में आप लोग आते नहीं हैं, फिर बोलेंगे कि सर प्रैक्टिस नहीं हो पाया. प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया था, बट एक ही कैंडिडेट प्रैक्टिस सेशन में आया था, तो फिर मुझे सेशन कैंसिल करना पड़ा. ओके, सो क्या फ़ायदा, अदर्स का भी जो प्रेजेंट हो रहा है उसका भी नुकसान हो रहा है, जो लोग प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं वो तो अपना नुकसान ही कर रहे हैं. सो बेस्ट है कि सब लोग आइए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन में. आपको ऐसे क्वेश्चंस कहीं मिलने वाले नहीं हैं जिस तरह के प्रैक्टिस सेशंस में करवा रहा हूँ. ठीक है, सो आप पार्टिसिपेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुझे भी अच्छा लगेगा. ओके, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को. थैंक यू. बाकी DIO का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगा मैं आपको और आगे बताता रहूँगा. ओके, चलो थैंक यू सभी लोग.